Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture I am going to talk about MCQ questions on Laplace transform. So this part will be helpful for your GATE examination as well for facing the competitive examination. Actually, I can't say it is useful for your GATE examination because here I am going to talk slightly simpler question as compared to GATE questions, but you will get the idea how these questions are generated. But these questions will be helpful for your competitive examinations. This is part 1. In part 2 and part 3, I will develop in future. This will be helpful for your GATE examination as well. Because I have taken less problems here. I'm going to talk less problems here because uh, we have one this subject Laplace transform, and generally examiner ask in mathematics. This part will also be covered in the mathematics. So mostly they have discussed in the mathematics. Only I am going to talk about the application part of this. Okay. So this is the question number 1. For the circuit given in figure, right? V0 is 2 volt and the inductor is initially relaxed. Inductor is initially relaxed का मतलब क्या है? This is under IL0 minus equal to IL0 plus just before and just after it is 0. No current stored by the inductor. It is under relaxed condition, means no current stored by inductor. The switch is closed at t equal to 0. जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हैं t equal to 0, the value of V at t 0 plus this value. What is the value of V? ये बताइए, अगर इंडक्टर रिलैक्स कंडीशन में है तो दिस इज ओपन सर्किट, इंडक्टर विल एक्ट एज ओपन, राइट? और यहाँ का वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? 2 वोल्ट. जस्ट इसका मतलब Vc0 माइनस इक्वल टू Vc0 प्लस इक्वल टू 2 वोल्टेज गिवन. इसका मतलब क्या है? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो यहाँ पर भी आएगा सेम. जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इन दिस वे, so this voltage will be reduced, this voltage will also be reduced, but here at t equal to 0 plus voltage is 2 volt, so it is 2 volt. Laplace transform of this waveform. Big question is Laplace transform of sin of omega t क्या होता है? It is omega upon s square plus omega square. और e raised to minus at के कारण क्या होगा? ओमेगा अपॉन s प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. सो क्या आंसर आएगा? ओमेगा अपॉन s प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ए आंसर इज करेक्ट, right? So question number 2 का answer A is correct. Question number 3. Just wait. Question number 3. If x of s is represented the Laplace transform of x of t and x of s is this one, then find the initial value. X of s is given this, find the initial value of x of t. Initial value of x of t क्या होता है? Limit x of t tends to 0 because it is initial value ना. So equal to क्या होता है? Limit s tends to infinite. Initial value में s tends to infinite, s f of s होता है. So I am interested here. Clear? Limit s tends to 0, sorry infinity, s tends to infinity, s f of s कितना है ये? S upon s plus a s plus b. Limit tends to infinity, so यहाँ आएगा infinity square upon यहाँ infinity plus a that is infinity square equal to 1 you will get. So it is C answer is correct. Question number 3, C is correct, right? Question number 4. The initial value of system represented by transfer function. This initial
इनिशियल वैल्यू क्या होगी, वही लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी, इनिशियल वैल्यू ऑफ द सिस्टम ये है एस, एफ ऑफ एस कितना है 25 अपॉन एस प्लस 2 एस प्लस 3, यहाँ इंफिनिटी आएगा अपॉन यहाँ इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी स्क्वायर, that is 1 by infinity, something upon infinity is 0, something upon infinity is 0, so B answer is correct. Okay, question number 5 I am going to talk. Question number 5, I am rubbing it. Question number 5, yes, the DC gain of the system represented by a transfer function this. Okay, DC gain K होता है. Okay, you can find DC gain K. So you will study this part in next year in control system. So we have to write in the time constant form. Time constant form. What is the time constant form? We have to write this in the time constant form, means 1 plus s tau. So यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, so 25, 2 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा 1 plus s by 2, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे, so क्या आएगा 1 plus s by 3. So this is called as time constant form. You have to write in 1 plus something की form में, 1 plus s tau. Tau कितना है 1 by 2, यहाँ tau कितना 1 by 3. So we have to write, so this is called as K, DC gain constant K कितना है 25 by 6. C answer is correct. Actually when we have given a transfer function or any function and we have to write in the time constant form क्या होता है 1 plus s tau. So इसका मतलब यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से 3, so you will get 25 by 6, that is C answer is correct. Okay, Laplace transform of the function this. पहले इसका क्या होगा e raised to minus at का 1 upon s plus alpha. e raised to minus at का क्या होगा 1 upon s plus alpha, और t का क्या होता है s square. So this is 1 upon s plus alpha square, 1 upon s plus alpha square. 6 का C answer is correct, right? Question number 7 I am going to talk. Sorry. Okay, question number 7. Question number 7. F of s is given this initial value. Initial value क्या होती है? Initial value क्या होती है? Limit s tends to infinity s f of s. F of s कितना है? S plus 2 upon s plus 1. S will be cancelled, right? If you put infinity plus 2, it is infinity upon infinity plus 1 is infinity, equal to 1. Infinity upon infinity is 1. So D answer is correct, right? Question number 8. For this function, find the final value. Final value में क्या होता है? Limit s tends to 0. Final value means limit s tends to 0 s f of s. Okay. Limit s tends to 0, s into f of s कितना है ये? S will be cancelled. जैसे ही आप s tends to 0 लिखेंगे तो it is equal to 0 plus 2 is 2 upon 0 plus 1 is 1. So you will get answer is 2. Yes, D answer is correct. Answer D is correct, right? Question number 9 I am going to talk. So first of all I am rubbing it. Okay. The equation of Vt in given waveform is, देखो यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, you can see here. So f of u ये क्या है यहाँ पर? It is a step function of magnitude is 1. तो इसका क्या आएगा u of t, but it is delayed by 1. It is delayed by 1. So u
of t minus 1. Then at 1, okay, 2, at 2, again magnitude is increasing by 1 because 2, 2 minus 2, 1 से 2 पे जा रहा है. So again plus u t minus 2, it is delayed by 2. At 3, again it is increasing by 1, so ut minus 3. But at 4 it is 3 से 1 आ रहा है, so minus, it is minus 3 u of t minus कितने से delayed है, by 4. So that is the answer. So ut minus 1, this is not correct, this is not correct, this is, yes, ut minus 1 plus ut minus 2 plus ut minus 3 minus 3 ut minus 4. So the answer is correct. We have solved some problems, so please see that concept, that concept will be clear, right? Question number 10. I am rubbing it. Question number 10. Yes, the Laplace transform of the function t u of t and u of t sin of t are respectively. So t का क्या होता है? Sorry, question number 10. Sorry, t का क्या होता है? ये t u of t में t है, t का क्या होता है? 1 by s square. और इसका क्या होता है? साइन ऑफ टी का, साइन ऑफ टी ओमेगा इज 1, सो इट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. सॉरी. यस, साइन ऑफ ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जस्ट आई एम कंफर्मिंग इट. Sine of omega t, Laplace transform of sine of omega t is omega upon s square plus omega square. Omega equal to what? 1. So omega equal to here 1. So 1. So this answer, this is 1 by s square, correct? A or C, and this C is correct. Okay. So C answer is correct. Sine of omega t is what? Omega upon okay. So I was confused actually, so I checked it. Okay. Question number, I'm rubbing it. Question number 11. Yes, 11. Question number 11. A rectangle current pulse of the duration t. Just I'm going to try it. Rectangle pulse is there. Pulse is what? Duration is t. And magnitude 1 has the Laplace transform. Magnitude is 1. Magnitude is 1 and duration is t, has the Laplace transform. Okay. So if you draw it, यहाँ पर क्या होगा? This is a step function, right? और यहाँ पर at t पे इसको 0 करना है from 1 to 2. So you have to add one more step function here in the other direction. So क्या आएगा इसका? इसका क्या आएगा? u of t, और इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? u of t minus t.
So you will get u of t minus u of t minus t, राइट. लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है इसका, 1 बाई एस, इसका क्या होता है 1 बाई एस ई रेस टू माइनस टी एस. So that is answer. So answer is I think it is correct. This D is correct. 1 by S if you take common, so you will get 1 minus e raised to minus ts. Clear? So D answer is correct. Question number 11. D answer is correct. Okay. So we have discussed so many problems in the theory. So you can check. I think it was a presentation number 4, unit number 4, presentation number 6 or 7. I had solved 5 numericals based on this. क्लियर ना. सो मैग्नीट्यूड 1 है और ये इट इज टी, दैट इज अ रेक्टेंगल, विड्थ इज टी. सो ये दिस इज द स्टेप फंक्शन और यू हैव टू ऐड वन मोर स्टेप फंक्शन इन द अदर डायरेक्शन टू मेक इट 0. ओके. ओके, आई एम रबिंग इट. क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. If for the equation x double dot plus 3x dot plus 3xt equal to 5, the solution of xt is approached, which is the following. Approaches which of the following values of st? So final value they are asking. Okay. Okay. Final value they are asking. They are asking the final value. T approaches to 0. They are asking final value. Anyway, x double dot plus 3x dot plus 2xt इक्वल टू 5. अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स टी एक्सएस माइनस एस एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स डॉट 0. इसका आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल डेरिवेटिव प्लस इसका क्या आएगा 3 ब्रैकेट के अंदर एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0 प्लस इसका क्या आएगा 2 एक्स ऑफ एस इक्वल टू इसका क्या आएगा 5 बाई एस. नाउ दिस इज नॉट गिवन, इसका मतलब इट इज गिवन 0, इट इज नॉट गिवन 0, इनिशियल कंडीशन इज नॉट गिवन 0. ओके. एनीवे, सो क्या आएगा, एक्स ऑफ एस कॉमन लिया तो क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस यहां से 3s प्लस यहां से 2 equal to 5 by s. So I am getting x of s equal to a 5 by s square plus 3s plus 2 I am getting. Okay, I got it. Now they are asking at t tends to infinity, limit क्या पुट करेंगे, limit t tends to infinity, limit s tends to 0. For the t tends to infinity, so यहाँ आएगा limit s tends to 0, that is final value theorem. और यहाँ क्या आता है into s x of s. तो ये अगली स्टेप में मैंने कर दिया. ओके. सो दिस s and this s will be cancelled. s tends to 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, this will become 0, this will become 0. 5 by 2 2.5 5.2 5 by 2. Yes, B answer is correct. 5 by 2. B answer is correct. Okay. Question number 13 I am going to talk. ओके. तो इसको क्या करेंगे, पहले आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, ये डबल डेरिवेटिव है, फिर इसका है, तो 5 का 5 बाई एस हो जाएगा. इनिशियल कंडीशन नॉट गिवन, इसका मतलब इट इज 0. क्लियर. सो यू विल गेट एक्स ऑफ एस, यू विल गेट एक्स ऑफ एस कितना आएगा, ये 5 अपॉन एस, ये. क्लियर. और इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ एस एक्स एक्स होता है,
So SS cancelled, you will get 2.5. I'm rubbing it. Thirteen. Okay. Laplace transform of the function f of t is this. Yeah. This is given. xt tends to infinity. कौन सी फाइनल वैल्यू है? फाइनल वैल्यू क्या क्या होता है? फाइनल वैल्यू क्या होता है? लिमिट h tends to 0 s x of s, f s into f of s. लिमिट h tends to 0 s f of s कितना है? 5s square plus 23s plus 6 upon s square plus 2s plus 2. This s will be cancelled. S tends to 0. This will become 0. This will become 0. This will become 0. This will become 0. 6 by 2 is 3. Yes, A answer is correct. 13 का A answer is correct, right? Question number 14. I am rubbing it. 14. Laplace transform of sine of alpha t. Sine of omega t क्या होता है? Omega upon sine of omega t. Laplace transform of sine of omega t क्या होता है? Omega upon s square plus omega square. So sine of alpha t क्या आएगा? Alpha square, alpha upon s square plus alpha square. B answer is correct. 14 का B. Laplace transform of cos of omega t. Cos of omega t का क्या होता है? Laplace transform of cos of omega t क्या होता है? S upon s square plus omega square. तो यहाँ क्या आएगा? S upon s square plus alpha square. ये आंसर इज करेक्ट, राइट? बाकी तो सब रॉन्ग ही हैं. क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी. क्वेश्चन नंबर 16. Okay, question number 16. Laplace transform exists when the function is piecewise continuous. Yes, Laplace transform is applicable for continuous function. A. The function is the exponential order. Correct. B is also correct. The function is piecewise discrete. No. The function is of differential order. No. Okay, so this A and B both are correct, right? What should be the value of Laplace transform for the time domain signal equations? E raised to minus at cos of omega t. Cos of omega t का क्या होता है? Please see here. Cos of omega t क्या होता है? S upon s square plus omega square. Cos of omega t. S upon s square plus omega square, right? And यहाँ e raised to minus at है. e raised to minus at के कारण क्या होगा? s plus alpha हो जाएगा upon s plus alpha square plus omega square. So please see this s plus alpha upon s plus alpha square plus omega. C answer is correct. Okay, C answer is correct. Question number 18. Rubbing it. Okay, 18. Shifting property of the Laplace transform. Okay, shifting the signal in the time domain corresponds to the shifting the signal in time domain corresponds to the multiplication by e raised to minus st in the time domain. No, multiplication बराबर है e raised to minus st, but not in the time domain. It is in the s domain, so it is not correct. Multiplication of by e raised to minus st, okay, in the frequency domain. This is correct.
multiplication by es2. No, it is minus, wrong, not correct. It is minus. So this B answer is correct. Question number 18, B answer is correct, right? Okay, question number 19. Question number 19. Which result is generated or obtained by the addition of a step to a ramp function? A ramp function था ऐसा, which result is generated obtained by addition of a step to a ramp function. ऐसा, इसका मतलब है it is shifted by step function, ऐसा हो जाएगा. So step function shifted by amount equal to ramp. No, step function will not be shifted. पूरा का पूरा ramp function will be shifted. Ramp function shifted by an amount equal to the step function. Yes, B answer is correct. B answer is correct. Ramp function will be shifted by A. Okay. Question number 20. Consider the function f of t that satisfied the differential equation given below. What should be generated by taking Laplace transform and replacing the term f of 0 minus and f of 0 plus by 0. Okay, initial condition 0. Okay, so क्या आएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, डी स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 f of s equal to 10 upon s. So s square plus 5s plus 6 equal to, yes, A answer is correct. Okay, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ this is minus, all are positive, so it is A answer is correct. And 21. With the reference to the diagram shown below, by how many instants is the ramp function shifted or delayed? Ramp function is shifted or delayed. कितने time से delayed है? It is by t. You can see it is ramp function is there. It is delayed by t. You can see here it is delayed by t. So answer is A is correct. Answer A is correct, right? It is delayed by t. Question number 22. Question number 22. In accordance to the Laplace domain theory, the transform admittance of resistance. Resistance का transform impedance क्या होता है? R will be R. Resistance का transform impedance क्या होता है? R will be R. But admittance क्या होगा? R will be 1 upon R. 1 upon R क्या होता है? Conductance. So B answer is correct. Resistance का R will be R. L का LS, that is impedance. C का 1 by CS. But ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस क्या होगा? 1 by LS, और C का क्या होगा? इंटू CS. तो उल्टा हो जाता है, R का 1 by R, लाइक दिस. ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस. ओके, सो इट इज, सॉरी this question number 23. Sorry, 23. Find the inverse Laplace transform of this. Okay, inverse Laplace transform. F of s is given कितना? s plus 1 upon s square plus 4. इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, s upon s square plus 4 plus 1 upon s square plus 4. It is very simple, right? Now here I am multiplying by 2, divide by 2. S upon s square plus 2 square.
यहाँ होगा 1/2 इंटू 2/s² प्लस 2²। ये क्या होता है, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है? s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। इट इज कॉस ऑफ ओमेगा कितना है 2t प्लस 1/2। ये किसका है? ओमेगा/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। इट इज साइन ऑफ t 2t। So this is the answer. Cos of 2t plus 1/2 sin of 2t. Question number 23. Is it clear? मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड किया है। आप चाहो तो उसको s प्लस जे एस, दो पार्ट इसके कर सकते थे, s+j2 s-j2 और उसको सॉल्व करते। या दिस इज वेरी सिंपल दिस टेक्निक, राइट? रब कर दूं? ओके। ट्वेंटी फोर। गिवन दैट, एक्चुअली ये पार्ट आपके मैथमेटिक्स में भी यूजफुल है गेट एग्जामिनेशन में। प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, गिवन दैट y डबल डॉट माइनस 5y डॉट प्लस 6y इक्वल टू 0, y that is initial condition is given, y0 equal to 2 and dy that is and y dot 0 equal to 2. Then find the value of y of t at t equal to 1. Y of t at t equal to 1. So I have given, just see here, I have given y double dot minus 5y dot plus 6y equal to 0. If you take the Laplace transform, of this equation, क्या आएगा? s square y of s माइनस s, y ऑफ 0 होता है, याद रखना, यहाँ उल्टा होता है, माइनस y डॉट 0। ओके, डबल डिफरेंशिएशन का y डबल डॉट का मतलब है d² dy dt²। डबल डॉट मतलब, डबल डॉट ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा, और ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 डॉट्स, इसको होता है d²y/dt²। ओके, सो इसको ऐसा आएगा, प्लस माइनस 5, y डॉट का क्या होता है? y डॉट का मतलब होता है, y डॉट मतलब dy/dt। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 प्लस 6 y ऑफ s प्लस 6 y ऑफ s इक्वल टू 0। ओके, सो y ऑफ s, ओके, y ऑफ 0 कितना दिया है? y ऑफ 0 कितना दिया है? 2। दिस इज गिवन 2। और y डॉट 0 कितना दिया है? इट इज आल्सो गिवन 2। और y ऑफ 0 तो मालूम है 2 है ही। ओके, तो कितना आएगा? s स्क्वायर माइनस 5s माइनस प्लस 6 y ऑफ s, राइट ना? s स्क्वायर ये वाले टर्म हो गई, माइनस 5s ये वाली टर्म हो गई, प्लस 6y ऑफ s ये टर्म हो गई। ओके, ओके, नाउ ये कितना है? माइनस 2s माइनस 2s, ओके, माइनस 2 माइनस 5 इंटू एस, वाई ऑफ एस कितना, सॉरी ये तो हो चुका है, ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कितना? 5 इंटू 2 10 इक्वल टू 0। सो यू विल गेट इक्वल टू व्हाट? एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 वाई ऑफ एस इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 2s, और ये -2 प्लस 8 सो यहाँ -8। ओके, so I am getting the answer
क्या आंसर आ रहा है? y ऑफ s इक्वल टू 2s माइनस 8 अपॉन s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6. Okay, find the value of y of t at t equal to 1. So okay, so इसके दो रूट आएंगे, 2s माइनस 8 अपॉन दोनों का सम 6 चाहिए, 5 चाहिए, एंड मल्टीप्लीकेशन 6 and 1, s plus 6 s minus 1 चलेगा ना? सॉरी, सॉरी, ये s minus 6, something is wrong actually, minus 5. I'm getting this equation right, 2s minus 8 upon this. So दोनों का सम ये प्लस कर दें तो क्या होगा? सम चाहिए 5, so minus 3. Okay, minus 2. सम कितना हो जाएगा? 3 and 2 5, and multiplication कितना होगा? 3 into 6, 3 into 2 6. Okay, so I'm getting this formula. Okay, so I'm getting this, I'm just rubbing it. Okay, so I'm getting s minus 3, s minus 2. Okay, क्या आएगा? So you will get a, this equal to 25 to 2s minus 8 upon s minus 3, s minus 2 equal to a upon s plus b upon s minus 3 plus b upon s minus 2. Okay, so a equal to what? If you solve a equal to what, I'm getting a equal to, if you multiply by this s minus 3, put s equal to 3. So s minus 3 will be cancelled. Okay, s equal to 3, so minus 3, s equal to 3 रखेंगे, so minus 2 upon minus 2 upon यहाँ 3 रखेंगे, 3 minus 1 2, so minus 2, a equal to minus 2. Okay, and b equal to what? b equal to what? Multiply both side by s minus 2, cancelled, s equal to 2. So 2 into 2, 4 minus 8. So it is, I'm getting minus 4, right now? Multiply by this and s equal to 2. So 2 into 2, 4 minus 8, minus 4 upon, कैंसिल हो जाएगा, minus plus 2 minus 3 minus 1. So I'm getting 4. So I'm getting y of s equal to minus 2 upon s minus 3 plus b equal to 4 s minus 4 upon s minus 2. So y of t कितना आ रहा है? minus 2 e raised to minus 3t plus 4 e raised to minus
2t. So I am getting this solution, minus 2 e raised to minus 3t plus 4 e raised to minus 2t, and put t equal to 1. यहाँ पर you have to put t equal to 1. So when you put t equal to 1, क्या आएगा? e raised to minus 2 e raised to minus 3 plus 4 e raised to minus 2. तो इसको सॉल्व कर लो आप. ओके, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्लस, सॉरी यहाँ प्लस, माइनस 2 e raised to minus plus 3t, और यहाँ प्लस आ रहा है, तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस. ओके, सो इट इज प्लस, बिकॉज यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस आएगा. सो e raised to प्लस minus 2 e raised to plus 3t 3 और plus 4 e raised to plus 2. So यहाँ plus sign है. Please be careful about it. So just put the value. I'm putting the value in the calculator. Just wait. E raised to shift e raised to क्या है? 3 equal to 20 into 2. I'm getting 40.17. So y of t equal to what? 40.17 I'm getting, plus 4. So E shift e raised to 2, 7.38 into 4. So I'm getting 29.55. 29.55. ये माइनस है. क्यों माइनस है? बिकॉज ये माइनस साइन है. दिस इज, सो आई एम गेटिंग 2 e raised to plus 3, okay, multiply by 2, so it will be negative. Now minus, this is minus कितना है? 40.17. So I am getting minus 10 point. I am getting answer minus 10.6. That is the answer I am getting. Okay, so just do it. This is the question we have given, equal to 0. इसका Laplace transform ले लो. Put the initial values. You will get this equation. Clear? इसका मतलब अगर ये आ रहा है तो you will get this answer, x square minus 3s minus 2s, that is minus 5s, plus 3 into 2 6 plus 6. You will get this answer, right? Then you will get a and b. You put it here, take the Laplace inverse, and after taking Laplace inverse, put t equal to 1. So you will get this answer, minus 10.6. That is a question they have asked in GATE examination. Okay, so slightly lengthy is there, but it is a very conceptual problem. Okay, so I am rubbing it. Okay, question number 25. Last question I am going to discuss. Question number 25. The Laplace transform of a unit ramp function starting at t equal to a is. यूनिट रैम्प फंक्शन है. यूनिट रैम्प फंक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिट रैम्प फंक्शन मतलब if you draw t versus function, it is starting from a, t equal to a, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यूनिट रैम्प मतलब only t is there, यूनिट रैम्प फंक्शन. सो इसको कैसे लिख सकते हैं? f of t equal to what? t minus a, it is delayed by a, so t minus a. f of s क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म t का क्या होता है? 1 upon s square, but it is delayed by a, so e raised to minus as, e raised to minus as upon s square. C answer is correct. Okay, C answer is correct. That is a 25. Clear?
So I am rubbing it. Okay. Now I had discussed 25 MCQs on this. क्लियर? और ये दिस पार्ट मैथमेटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो मैथमेटिक्स में भी से भी आप पढ़ सकते हैं. कुछ पार्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आई हैव टेकन इट आल्सो, and here mainly we are interested in the application part. Okay, so I have taken part 1. In future I will take part 2 and part 3 also. Okay, so here I am stopping it here. These are the answers is given. You can check your answer. Okay, thank you very much for listening me carefully. Thank you.